हदफ मुकर्रर कर दिया और चारों सूबों में शजरकारी मुहिम के दौरान खुद हिस्सा लेने का भी फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा हुकूमत अब तक 70 करोड़ पौधे पहले ही लगा चुकी है। शजरकारी मुहिम में 35 करोड़ पौधे फरवरी से अगस्त तक लगाए जाएंगे। वजीर आजम ने चारों सूबों में शजरकारी मुहिम में खुद हिस्सा लेने का फैसला किया। इमरान खान हफ्तावार एक सूबे में शजरकारी की तकरीब में शरीक होंगे। जराये ने बताया कि सूबों में शजरकारी तकारीब का मकसद लोगों में पौधे लगाने का रुझान पैदा करना है। इस हवाले से जराये का ये भी कहना है कि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने शेड्यूल तरतीब दे दिया। इमरान खान जल्द सिंध में मैंग्रोव से मुतालिक तकरीब में शरीक होंगे। ये भी कहा गया है कि मैंग्रोव जहरीली आबो हवा जज्ब करके समंदरी आलूदगी से बचाने का सबब बनते हैं। पंजाब, KPK और बलूचिस्तान जैतून की शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे, जबकि इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और GB में आबो हवा की मुनासबत से पौधे लगाए जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाबहक हो गए, जबकि 1000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 31 अफराद जाबहक, जबकि 1404 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 12,307 अमवात हुई, जबकि अब तक कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5,63,029 हो गई। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 5,25,087 है और फाल केसेस की तादाद 25,635 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,475 कोरोना टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक सिंध में 2,53,511, पंजाब में 1,63,833, खैबर पख्तूनख्वा 69,778, बलोचिस्तान में 18,929 केसेस, इस्लामाबाद 42,590, गिलगित बल्तिस्तान में 4,940 केसेस और आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 9,448 हो गई। K2 की बुलंदियों में खो जाने वाले मारूफ पाकिस्तानी कोहे पैमा मोहम्मद अली सतपारा और साथियों की तलाश जारी। लापता कोहे पैमाओं की तलाश के लिए 8 रोज से कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल कामयाबी न मिल सकी। दूसरी जानिब खराब मौसम पाक फिजाइया के जदीद टेक्नोलॉजी से लेस तैयारों को इंतहाई बुलंदी पर उड़ान भरने की राह में रुकावट बन रही है। आज भी मौसम की खराबी की वजह से सर्च ऑपरेशन न किया जा सका। सर्च ऑपरेशन में पाक आर्मी एविएशन और मकामी कोहे पैमा हिस्सा ले रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान आइसलैंड और चिली के स्पेस एजेंसियों ने सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी हैं, जिनमें बोटलनेक के करीब चंद मकामात की निशानदेही की गई है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद वहां लापता कोहे पैमा बर्फ के गार बनाए बैठे हैं। वाज़ेह है कि 5 फरवरी को K2 की चोटी को सर करने और वहां सब्ज हिलाली परचम लहराने का ख्वाब लिए मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथी 8,200 की बुलंदी पर बॉटल नेक क्रॉस कर चुके थे कि उनसे मवासलाती राब्ता कट गया, जिसके बाद से ताहाल मोहम्मद अली सतपारा और साथी लापता हैं। मुहिम में शरीक साजिद सतपारा के मुताबिक उनके वालिद और साथियों ने चोटी सर कर ली थी। वापसी पे कोई हादसा हुआ होगा। इस्लामाबाद बदमाशों का शहर नहीं, इसलिए 33 में 30 नाके खत्म कर दिए, जबकि बाकी 3 भी जल्द खत्म कर देंगे। चौधरी निसार अपने साथ जैमर वाली गाड़ी रखते थे, लेकिन आज वजीर दाखिला बगैर जैमर की गाड़ी में घूमता है। इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में जदीद पुलिस नजर आएगी। पाकिस्तानी सिफारत खानों में 3 साल से जायद मुलाजमत करने वालों को वापस बुला रहे हैं। जिन्होंने गैर मुल्की शहरियत दी, उन्हें नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को हलवा खिलाने की बात की थी, लेकिन अब मौसम बदल गया है, इसलिए वो बात वापस लेता हूँ। PDM भी अपने मामलात पर सोचे। धरना बहुत मुश्किल काम है। हमें 126 दिन के धरने का तजुर्बा है। कानून के दायरे में लॉन्ग मार्च आए तो कोई मसला नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल मेरी बात समझते हैं। ओपोजिशन को बिल आखिर पीपल्स पार्टी की बात ही माननी है। मैं PDM के लोगों से कहता हूँ, मेरी बात आसिफ जरदारी को समझ आ गई हुई है। बिलावल भी समझता है, दिल से मेरी बात को समझता है। वो मेरे दिल के करीब है और मेरी दिल की बात समझता है। उसको पता है कि शेख रशीद सही कह रहा है। बिल आखिर इन्होंने पीपल्स पार्टी की बात माननी है।
वजीर दाखिला ने कहा कि पाक अफवाज मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रही है। जो लोग फौज को गालियां देते हैं उनकी जबान खींच लेनी चाहिए। जो लोग फौज को गाली देते हैं उनकी जुबान गुद्दी से खींच लेनी चाहिए कि अजीम सबूत जो जान हथेली पे रख के आपके लिए दहशतगर्दी खत्म की। 4 जमातें मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। वो लोग इंतशार फैला रहे हैं जो पाकिस्तान बनाने के भी खिलाफ थे। दुख मुस्लिम लीग नून का है। जो फौज के खिलाफ बात करे वो मुस्लिम लीगी नहीं। शेख रशीद ने कहा 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात को मीडिया ने अहमियत दी है। सेनेट इलेक्शन ओपन करें या खुफिया करें, बिकने वाला बिक जाता है। बिकने वालों की लालच उन्हें बर्बाद कर देती है। किसी का एक वोट कम हो गया तो कयामत नहीं आ जाएगी। हुकूमत ने 2.5 माह में मुसलसल छठी बार आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए फी लीटर इजाफे की तैयारी कर ली गई है। हतमी फैसला आज वजीर आजम इमरान खान करेंगे। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 4 से 5.5 रुपए फी लीटर महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई है। ओगरा की जानिब से अरसाल करदा समरी में लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में भी इजाफे की तजवीज दी गई है। डीजल की कीमत में 14 रुपए 75 पैसा इजाफा तजवीज किया गया है। पेट्रोल की हालिया कीमत 112 रुपए फी लीटर है, जो इजाफे के बाद 128 रुपए हो जाएगी। डीजल 116 रुपए 7 पैसे से महंगा होकर 130 रुपए 82 पैसे फी लीटर मिलेगा। ख्याल रहे कि 1 दिसंबर से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 16 रुपए 37 पैसे महंगी हो चुकी है। याद रहे कि गुज़िश्ता माह हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर इजाफा किया था, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 88 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल में तब्दीली की गई थी, जिसके तहत उम्मीदवारों की जानिब से आज भी कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का सिलसिला जारी है। इतवार के रोज पेशावर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाजिया तहमास जबकि PTI के दोस्त मोहम्मद महसूद ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इसके अलावा लाहौर में तहरीक इंसाफ के मलिक जहीर अब्बास खोकर ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सेनेट की 48 खाली निशिस्तों पर अब तक 75 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, जिनमें शिबली फराज, सानिया निश्तर, अब्दुल हफीज शेख, फौजिया अरशद, जरका तैमूर, सैयद यूसुफ रजा गिलानी, सलीम मांडवीवाला, शीरी रहमान, फारूक नाइक, परवेज रशीद, ताज हैदरम मुशाहिदुल्लाह खान, करीम ख्वाजा, अब्बास आफरीदी और फरहतुल्लाह बाबर जैसे अहम रहनुमा शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली करते हुए कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में 2 दिन का इजाफा किया था। ताहम इंतखाबात 3 मार्च को ही होंगे। Welcome to Colonial Beach, Virginia, and you can see
Somebody is welcoming us here right now. So let's check out and go closer to them. Hello, how are you all doing? Hey everybody, I'm at Colonial Beach. Look at this nice. Somebody welcome, whatever I'm telling you. मैं सामने आज लाइफस्टाइल टीवी चैनल पे आप सबके लिए मोहम्मद हारिस बर्की, जो एक डॉक्टर और एक वालियन है, फ्रॉइड की ईगो और इड के बारे में कुछ लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, आइए सुनते हैं। सब नशा है, करके सितम वो इंतहा का, करके सितम वो इंतहा का, कुछ देर होते हैं मेहरबां, हमारी जिंदगी का हासिल है इस मेहरबानी का नशा। लुत्फ बढ़ता गया जू जू शिद्दत जफा बढ़ती गई, उन्हें क्या खबर थी हम पे चढ़ा है खुद अजीती का नशा। जो चाहिए जहां चाहिए जब चाहिए मुझे चाहिए, जो चाहिए जहां चाहिए जब चाहिए मुझे चाहिए, दिलों में बसा है इस कदर खुद गर्जी का नशा। सबसे आला सबसे उर्फा कोई नहीं मेरे जैसा, करता है मखमूर जब छाता है खुद सताइशी का नशा। कुव्वते इक्तदार को कम ही हजम कर पाते हैं लोग, कम ज़र्फ कर देता है पागल कुर्सी का नशा। जिस कदर मजलूम हूँ इस कदर मजबूर हूँ, कदम क्या उठें जब हो जाए खुद तरसी का नशा। सर को धुनते धुनते होश हुए ऐसे गुम, दुनिया की खबर ही ना रही जब मौसीकी का छाया नशा। जुए को जिंदगी समझना और जिंदगी को जुआ, हार कर सब मालो मता उतर जाता है जवारी का नशा। हम तो कुर्बत से कभी आशना ही ना थे, हम तो कुर्बत से कभी आशना ही ना थे, तेरी संगदिली से तो है आशिकी का नशा। दुनिया माफिया को छोड़कर गोशाए नशी होना, ये फकीरी नहीं ये है फकीरी का नशा। हारिस नशे और भी हैं, हारिस नशे और भी हैं, महके नशे के सिवा, जिंदगी के हर रूप में छुपा हुस्ने आवारगी का नशा। आदाब। Hi, I'm Rocky Kramer, and you're watching Lifestyle TV.
USA. साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवासे से बरियत के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि जमहूरियत कमजोर है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप की बरियत के बाद रद्द अमल के इजहार में कहा है कि ट्रंप को सजा नहीं मिल सकी मगर आयद किया गया इल्जाम मुतनाज़ नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी पार्लियामेंट पर हमला हमारी तारीख का अफसोसनाक बाब है। इसने हमें याद दिलाया कि जमहूरियत कमजोर है। अमरीकी सदर जो बाइडन का ये भी कहना है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, जमहूरियत का हमेशा दिफा किया जाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 6 जनवरी को अमरीकियों को उकसाकर कांग्रेस की इमारत पर हमला कराने का इल्जाम था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेट के फैसले का खैर मकदम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये अमरीका को दोबारा अजीम बनाने का तारीखी और खूबसूरत लम्हा है। अभी तो शुरुआत हुई है। साबिक अमरीकी सदर का कहना था कि आने वाले महीनों में और भी बहुत कुछ बताना है। माजी में ट्रंप ने मवासे को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए उसकी शदीद मजम्मत की थी। वाज़ेह रहे कि मवासे का सामना करने वाले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए। अमरीकी सेनेट ने साबिक सदर को बरी कर दिया। 57 अरकान ने मुजरिम करार देने के हक में और 43 ने मुखालफत में वोट दिया। 7 रिपब्लिकन अरकान ने सजा के हक में वोट दिए। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 4,92,521 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 2,81,06,704 हो चुकी है। कोरोना वायरस के अमरीका में 95,73,871 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 19,927 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,80,40,312 कोरोना मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 4,92,521 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 2,81,06,704 हो चुकी है। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी डॉक्टर को कोविड-19 वैक्सीन से मुतालिक हुकाम की हिदायत पर सख्ती से अमल करना महंगा पड़ गया। वैक्सीन की खुली शीशी में बच जाने वाली 10 खुराकें होने की सर पर लटकती तलवार पर एक्सपायर और 6 घंटे में डॉक्टर ने वैक्सीन के अहल अफराद को ढूंढने के लिए घंटों घोड़े दौड़ाए। नाकामी पर वैक्सीन की आखिरी खुराक बीवी को देना पड़ी तो हुकाम ने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी के तहत डॉक्टर के सर वैक्सीन चोरी का इल्जाम धरते हुए डॉक्टर को सरकारी नौकरी से बरतरफ कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रियासत टेक्सास के शहर शुगरलैंड से ताल्लुक रखने वाले 48 साल डॉक्टर हसन गोकल कोरोना वबा के फैलने के बाद गुज़िश्ता बरस अप्रैल से हैरिस काउंटी के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की कोविड-19 रिस्पांस टीम का हिस्सा थे। दिसंबर में उन्हें हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें हाल ही में मंजूर शुदा वैक्सीन मॉडर्ना के इस्तेमाल के कवायद ज़वाबित से आगाह किया गया, जिसके तहत वैक्सीन की एक शीशी में मौजूद 10 खुराकों को शीशी खोलने के 6 घंटों के अंदर इस्तेमाल करना जरूरी है। डॉक्टर गोकल का कहना है कि उन्हें सख्ती से हिदायत दी गई थी कि कीमती वैक्सीन का एक भी कतरा जाया न किया जाए। दिसंबर में ह्यूस्टन में एक वैक्सीन इवेंट के दौरान वैक्सीन की एक शीशी खोलने के बाद डॉक्टर हसन गोकल के पास कोविड-19 की 10 खुराकें बच गई थीं, जो अगले 6 घंटों में ज़ायदुल मियाद होने वाली थीं। डॉक्टर गोकल को उन्हें फौरी इस्तेमाल करना जरूरी था। उन्होंने वैक्सीन के अहल अफराद को ढूंढने की पूरी कोशिश की। उन्होंने आखिरी खुराक फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला अपनी बीवी को दी और 60 साल से जायद उम्र के दीगर अफराद को वैक्सीन दे दी। अपने सुपरवाइजर को
इसकी तफसीलात जमा करवा दी। प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर हैरिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने उन पर $135 मालियत की वैक्सीन की 10 खुराकें चुराने के फर्द जुर्म आयद कर दी। अटॉर्नी ऑफिस ने कहा कि उन्होंने अपनी हैसियत का नाजायज इस्तेमाल किया और कानूनी तौर पर वैक्सीन के हकीकी हकदारों पर अपने अजीज अकारिब को फौकियत दी। बाद में इल्जामात बेबुनियाद होने के बायस उन पर से केस खारिज कर दिया गया, लेकिन बदनामी की वजह से वो दोबारा नौकरी के हुसूल में नाकाम रहे और अब तक बेरोजगार हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर गोकल का कहना है कि ये उनकी जिंदगी के बदतरीन लम्हात हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया है। इन बेबुनियाद इल्जामात से होने वाली बदनामी ने उनकी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। Welcome to Colonial Beach, Virginia, and you can see somebody is welcoming us here right now. So let's check out and go closer to them. Hello, how are you all doing? Hey everybody, I'm at Colonial Beach. Look at this nice, somebody welcome, whatever, I'm very मैं सामिना आज लाइफस्टाइल टीवी चैनल पे आप सबके लिए मोहम्मद हारिस बरकी, जो एक डॉक्टर और एक वालियन है, फ्रॉइड की ईगो और इड के बारे में कुछ लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, आइए सुनते हैं। सब नशा है, करके सितम वो इंतहा का, करके सितम वो इंतहा का, कुछ देर होते हैं मेहरबां, हमारी जिंदगी का हासिल है इस मेहरबानी का नशा। लुत्फ बढ़ता गया जू जू शिद्दत जफा बढ़ती गई, उन्हें क्या खबर थी हम पे चढ़ा है खुद अजीती का नशा। जो चाहिए जहां चाहिए जब चाहिए मुझे चाहिए, जो चाहिए जहां चाहिए जब चाहिए मुझे चाहिए, दिलों में बसा है इस कदर खुद गर्जी का नशा।
सबसे आला सबसे उर्फा कोई नहीं मेरे जैसा, करता है मखमूर जब छाता है खुद सताइशी का नशा। कुव्वते इक्तदार को कम ही हजम कर पाते हैं लोग, कम ज़र्फ कर देता है पागल कुर्सी का नशा। जिस कदर मजलूम हूँ इस कदर मजबूर हूँ, कदम क्या उठें जब हो जाए खुद तरसी का नशा। सर को धुनते धुनते होश हुए ऐसे गुम, दुनिया की खबर ही ना रही जब मौसीकी का छाया नशा। जुए को जिंदगी समझना और जिंदगी को जुआ, हार कर सब मालो मता उतर जाता है जवारी का नशा। हम तो कुर्बत से कभी आशना ही ना थे, हम तो कुर्बत से कभी आशना ही ना थे, तेरी संगदिली से तो है आशिकी का नशा। दुनियाए माफिया को छोड़कर गोशाए नशी होना, ये फकीरी नहीं ये है फकीरी का नशा। हारिस नशे और भी हैं, हारिस नशे और भी हैं, महके नशे के सिवा, जिंदगी के हर रूप में छुपा उसने आवारगी का नशा। आदाब। Hi, I'm Rocky Kramer, and you're watching Lifestyle TV USA. बॉलीवुड स्टार करीना कपूर कहती हैं कि उन्होंने सैफ अली खान की मूंछों के बावजूद भी उनसे मोहब्बत की है। आज दुनिया भर में मगरिबी त्यौहार वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। इस दिन लोग अपने प्यारों से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ तोहफे देते हैं, जिनमें लाल गुलाब और चॉकलेट्स सरे फहरिस्त हैं। इस मगरिबी त्यौहार को जहां दुनिया भर के लोग मना रहे हैं, तो वहीं नामवर शख्सियात भी इस दिन अपने प्यारों से अपनी मोहब्बत का इजहार करते दिखाई दे रही हैं। अब इस जमन में बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपने शौहर सैफ अली खान के हमरा माजी की यादगार तस्वीर शेयर की है। मज़कूरा तस्वीर उस वक्त की है जब सैफ अली खान ने अपने लुक तब्दील करने के लिए मूछें रखनी थी। करीना कपूर ने इस तस्वीर के कैप्शन में सैफ अली खान से मुखातिब होकर लिखा कि उन मूछों के बावजूद भी मैंने तुमसे मोहब्बत की है। याद रहे कि करीना कपूर और सैफ अली खान साल 2012 में रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए थे। करीना कपूर और सैफ अली खान के यहाँ पहले बच्चे की विलादत 20 दिसंबर 2016 में हुई थी, जबकि इस मारूफ फिल्मी जोड़े ने दूसरे बच्चे के हवाले से करीना की उम्मीद से होने का ऐलान गुज़िश्ता बरस अगस्त में किया था। एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने कहा कि वो दूसरे बच्चे की विलादत से कुछ परेशान तो हैं, लेकिन वो पुरजोश भी हैं कि घर में एक छोटा बच्चा खेलता कूदता नजर आए। हॉलीवुड अदाकारा निकोल किडमैन पर सिडनी के थिएटर में एक शख्स ने हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें वहां से जाना पड़ा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 53 साला अदाकारा निकोल किडमैन अपने शौहर के साथ गुज़िश्ता माह थिएटर में शो देखने गई थीं। शो के इख्तिताम पर अदाकारा समेत कुछ लोग दाद देने के लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इस दौरान अदाकारा के पीछे बैठे शख्स ने उनसे बैठने को कहा और बादअज़ा उन पर हमला कर दिया। वाक़े के बाद अदाकारा और उनके शौहर को
वहां से बाहर भेज दिया गया और मुबैना तौर पर हमला करने वाले शख्स के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को बुलाया गया। वाज़ेह रहे कि निकोल किडमैन ऑस्कर समेत कई अवार्ड्स जीत चुकी हैं। Welcome to Colonial Beach, Virginia, and you can see somebody is welcoming us here right now. So let's check out and go closer to them. Hello, how are you all doing? Hey everybody, I'm at Colonial Beach. Look at this nice somebody welcome, whatever I'm telling you. मैं सामिना आज लाइफस्टाइल टीवी चैनल पे आप सबके लिए मोहम्मद हारिस बरकी, जो एक डॉक्टर और एक वालियन है, फ्रॉइड की ईगो और इड के बारे में कुछ लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, आइए सुनते हैं। सब नशा है, करके सितम वो इंतहा का, करके सितम वो इंतहा का, कुछ देर होते हैं मेहरबां, हमारी जिंदगी का हासिल है इस मेहरबानी का नशा। लुत्फ बढ़ता गया जू जू शिद्दत जफा बढ़ती गई, उन्हें क्या खबर थी हम पे चढ़ा है खुद अजीती का नशा। जो चाहिए जहां चाहिए जब चाहिए मुझे चाहिए, जो चाहिए जहां चाहिए जब चाहिए मुझे चाहिए, दिलों में बसा है इस कदर खुद गर्जी का नशा। सबसे आला सबसे उर्फा कोई नहीं मेरे जैसा, करता है मखमूर जब छाता है खुद सताइशी का नशा। कुव्वते इक्तदार को कम ही हजम कर पाते हैं लोग, कम ज़र्फ कर देता है पागल कुर्सी का नशा। जिस कदर मजलूम हूँ इस कदर मजबूर हूँ, कदम क्या उठें जब हो जाए खुद तरसी का नशा। सर को धुनते धुनते होश हुए ऐसे गुम,
दुनिया की खबर ही ना रही जब मौसीकी का छाया नशा। जुए को जिंदगी समझना और जिंदगी को जुआ, हार कर सब मालो मता उतर जाता है जवारी का नशा। हम तो कुर्बत से कभी आशना ही ना थे, हम तो कुर्बत से कभी आशना ही ना थे, तेरी संगदिली से तो है आशिकी का नशा। दुनिया माफिया को छोड़कर गोशाए नशी होना, ये फकीरी नहीं, ये है फकीरी का नशा। हारिस नशे और भी हैं, हारिस नशे और भी हैं, महके नशे के सिवा, जिंदगी के हर रूप में छुपा उसने आवारगी का नशा। आदाब। Hi, I'm Rocky Kramer, and you're watching Lifestyle TV, USA.
to Colonial Beach, Virginia, and you can see somebody is welcoming us here right now. So let's check out and go closer to them. Hello, how are you all doing? Hey everybody, I'm at Colonial Beach. Look at this nice, somebody welcome, whatever, I'm very मैं सामने आज लाइफस्टाइल टीवी चैनल पे आप सबके लिए So today I'm at Berkeley, Virginia. Gorgeous places, Dr. Moby. Keep watching our transmission. It's excellent. We really take care of your family needs as well as entertainment. So enjoy. And this is Dr. Moby checking out from Berkeley Marine. Hey, you want a picture? Oh, look at them. They want a picture with me. Next time, buddies. Look at the nice day to do boating as well as enjoy the nature. This is Berkeley. It's gorgeous. So it looks like we have great fishing here, Berkeley, and you can check. It is a lot of fishing actually, walleye. Wow. So those are really nice. This is nice if you like hiking. You can take trails and go there. It's really nice. Beautiful green, and you can imagine if you take a walk, it'll be very relaxed. As you can see, sun is shining through the trees. Gorgeous view, gorgeous view. And it is so great, all green around us. So you can take a trail here and enjoy. As you can see, gorgeous, gorgeous day for fishing. And a lot of people are fishing. We are boating too. Hi, this is Dr. Moby with Lifestyle TV. Keep watching our TV and shows. Great way to watch entertainment and so forth.
Rocky Kramer, Style TV, USA. Coming up, we'll be on location at Best Health Sleep Center in Dumfries, Virginia, discussing the latest advances in sleep disorder treatment, health, and wellness, and how they can effectively treat sleep apnea and help you get a good night's sleep, as well as restoring your health and wellness with one of this area's top doctors, Dr. Mubashir Fazal. Dr. Fazal is board certified in sleep medicine, hospital medicine, as well as family medicine, and has well over 20 years of experience. Dr. Fazal also received a medal for academic excellence while he was attending medical school. He also was chief resident and then became chief of medicine at a hospital in Michigan. Dr. Fazal works extensively with not only the private sector, but also federal government organizations, including the VA and the U.S. Army, among others. Dr. Fazal is also one of the very few doctors in this DMV region who specializes in both pediatric as well as adult sleep medicine. He is widely recognized as one of this region's top doctors. Welcome to the Best Health Sleep Center. This is Dr. Fazal, Medical Director, as well as Board Certified Sleep Specialist. I'm here to help all your sleep needs. We serve Maryland and Virginia area, and we take care of adult as well as pediatric population. Welcome. My name is Samira, and I'm the office manager of Best Health Sleep Center. I will make sure you've got a good customer service, and I will take care of all your sleep needs and scheduling. Hi, I'm Christopher. I'm a patient care coordinator, and I'm here to go the extra mile and make sure you get exceptional customer service. Hi, my name is Liz. Bienvenidos a nuestra clínica. Estamos aquí para ofrecerte ayuda si tienes problemas para dormir. Si tienes problemas de sobrepeso, si sufres de ansiedad o si no puedes dormir y porque roncas mucho, estamos aquí esperándote que nos llames. Tenemos oficinas en Maryland y Virginia. Gracias, te esperamos. My name is Mohsen. I take care of all the DME equipment needs. Even after the follow-up, I make sure that all the patients have been taken care of at the best level. They really care about their patients, very responsive. Anytime I've had any question or issue, either the staff or the doctor, Fazal gets back to me quickly. It's been great working with him. I would say out of a scale 1 to 10, he's a 20. And the nurses and the staff are beautiful people. Hi, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to News and Views, and we have excellent today. As you can see, we have a lot of guests today joining one by one, and we are. Hi, everyone. Okay, well, let's start with Mr. King since he joined the first one. So, just for everybody's basically info. Mr. King has been longest serving commissioner in DC, 33 years, and served under each mayor, assistant for elderly affairs, also chair board for the 5 Democratic Seniors COVID-19 Commission, member of National Organization Black Men for Biden. Wow, what a service! What a service! Yes, and I see you've been joined by my colleague, Caroline Petty. I see she's on. Okay, yes. Hi, Caroline. How are you? And we have Saba Shams and we have Dr. Arif with us. So we are going to go one by one, all of them. And let's welcome Dr. Masood from Maryland. He's representing Maryland today.
So Dr. Masood is by profession pediatrician and also very active in Democratic Party. He has really helped raise a lot of money for different candidates. So tell me a little bit about yourself, Dr. Masood, your political affiliations and so on. Well, yeah, coming from Karachi, I was involved in the political parties there. At my med school, like we had some student bodies. Then I came here, and then honestly, I was busy with my life, with my profession. 9/11 happened, so I had two choices: either stay in my house or be active. So I joined the volunteer board of the Montgomery County Consumer Protection Advisory Board and the Recreation Board. Slowly I joined. I was president of Montgomery County Muslim Council. And I had a good rapport with all the county executive, county office, even with the governors. We worked on the governorship when Hogan won. And lately I've been involved with Brooke Lehman. She's ombudsman, not ombudsman, comptroller of Maryland. And soon Clifton Holland also. But my thing is, I am an immigrant, I'm a Pakistani, but I would like to get involved. And I think it's a beautiful country, beautiful place to get involved with. I've been welcomed, honestly, very, very with open arms to come join the political process and be part of it. Like, I need to be productive to prove myself that I really love the country. I really want to be part of the system. So have been very active over since Mubashir knows me, but I think I'll stop here. And I'll pitch in as we move on. Okay, and we have our guest today also, Caroline Petty. She's the chair of DC Statehood Committee for Ward 5 Democrats, longtime resident of DC, and has been active in DC statehood for 10 years. And that's one of the topics we're going to discuss today. So how are you doing, Caroline? I'm doing very well. Thank you for coming to our show. Thank you for having me. I really appreciate it. And we have Shaba Shams, my friend and a great speaker, as well as she does her show, and she's doing a phenomenal job in Florida, right? Yeah, exactly. And I believe that I might be the only independent here. Thanks for having me. Well, I'm on your side. Don't worry about it. I'm officially independent too, because So thank you for having us, guys. Okay. And we have Dr. Rauf Arif from Texas. So he's all the way from Texas. So that's very unique. Today we have combination of all kind of views here. So Dr. Arif is actually teaching in the university right now in journalism, right? That's right. Yep. So, and he's been in, of course, doing journalism for many years, although he looks very young. So, right, he's very well experienced. So let's start with number one issue, and that is COVID right now. And I will just show what is the CDC data right now is basically showing for. So our data figures are from CDC basically. So as you can all see, look at this tracker, and cases are 25,780, and cases in last 30 days been uptick and then down. Total vaccines been 29.6, deaths 435. That's a big number. You know, they're probably close to approaching 500,000 for sure. And then look at the various vaccination, and this is the vaccination map, and the darker blue means greater than 11,000, I believe. Yeah, that means the greater than 11,000 shots. Looking at Virginia, we are, I guess, total distribution, as you can see, we're still behind, I guess. So let's focus first on this COVID. So tell me, what should be the
administration policy, how to get it done? We all know they have to do it, but how to get it done? Well, if I may just jump in it for a minute, you know that there's a $1.9 trillion bill that's been put forth by President Biden, and part of that is goal in the first 100 days is to vaccinate 1 million folks in the first 100 days. So you do have an issue of supply and demand. And we're having some serious problems in Washington, D.C. by those who might be disproportionately affected by the COVID-19 are not able to get the vaccine or not able to get slots to get it, and not even able to set on the waiting list. So we got a lot of seniors in D.C. who have a lot of pain, and then we have some seniors who don't want to get it. For example, I'm fortunate in my community, Sibley Hospital partnered with Johns Hopkins Hospital to go to 14 senior buildings in Washington, D.C. to actually go there to vaccinate those seniors. And I was checking the other day in terms of one of my buildings, I have about 126 units in terms of seniors who actually came downstairs. Well, it kind of disturbed me that many of the seniors in the building still in the state of fear, they keep us to come down. Even though we expanded the vaccine facility, one of the things that the president of that building had to do was to go 2 buildings over and sound the alarm and say somebody's actually over here to bring people over from the senior building. We traveled problem with, for example, in the white community in Washington, D.C., 70% of those, the white community seniors, sucked up all of the slots in the first week. So we had to go back and change things around by zip code to make sure those seniors who are in the hospital and who are most at risk prior to those seniors for the vaccine. But we still have a problem with too many seniors in D.C. in fear of what happened way back in the Tuskegee days and back in the slavery days. It's just not feeling comfortable with neither one of the vaccines, and even though we got another one, hopefully we'll be approved in 2 or 3 weeks by Johnson. So I'll leave it like that. Okay, thank you for Mr. King. So then let's go to Caroline. Caroline, what do you think we should do for? Or I think in this program we like to have suggestions and what we think government should do. That maybe somebody watching our show might get a good idea. So we are we'll give the numbers and then we'll come up with solutions. So where do you see, Caroline, what's the problem right now we are facing? Well, I'm not a medical doctor or a medical professional by any means, but just as a lay person, as an ordinary resident, I would say that the couple of things. One is we absolutely need to be doubling down on our social distancing and kind of safe practices for avoiding transmission of the COVID. And if there's a question about that, there really shouldn't be. And likewise with the masks, we need to mask up at every opportunity when we're going to be around people, walking on the streets, grocery shopping, that sort of thing. And thirdly, of course, is vaccinations. The vaccinations are just starting to roll out in the District of Columbia. We're experiencing a little bit of fits and starts and growing pains here and there. But when you get the opportunity to get a vaccination, by all means, get it. Okay. So what you're suggesting is that by itself, vaccination will not be enough to end the pandemic. We still have to do our, safe practices, and that makes sense because vaccine takes time to act, and till that time, we need to have both strategies working side by side. And the other problem we are facing is we have these new virus mutant, and that is going to spread too. So the vaccine could be somewhat effective, but not very effective. And the question is, can we catch up or give vaccination as fast as possible
So we have benefit from it. So I hope it's not null and void type situation. So best, I think, like you said, both strategies should be there. We cannot just party after the vaccines. That's absolutely wrong. So what do you think, Sheba, is happening in your neighborhood? Are people taking it seriously, vaccination? Before I get to the vaccination, first of all, I think this is the first time that we get together since the pre-election era. So I'm super happy to say we did it in a way. Yeah. And I must admit that since this whole thing was over, maybe January 20th, we can believe that we had to wait that day. I think coming back to a certain level of normalcy, whatever that means for us now, post-Trump tweets, post-chaos and drama. I mean, for the first time, I enjoy actually turning on TV with boring news. And I enjoy the fact that it's like, the news now is just politics. You know, it's what the government needs to do. Yeah, and to some extent, it might be a little bit boring. And it should be that way, right? Nobody looks for politicians to be entertainers or just inject in us this level of chaos and uncertainty. So I am so grateful that since January 20th, it seems like, you know, like the tone has calmed down a little bit, and we're looking at an administration that seems to be a little bit kind of knowledgeable of what the heck they need to do, you know, without that level of tension and chaos. Having said that, it doesn't mean that they're not going to make their own mistakes, but I bet you the mistakes will not have the drama that was so exhausting and exhaustive over the past 4 years. So I wanted to let that sentiment, as an independent, non-biased, you know, citizen, I wanted to share this feeling of I enjoy the current boredom sense of politics because it should be that way. And I go to bed not worried about what is the last minute, you know, thing that can happen overnight. Back to your question, Dr. Moby, I think with COVID-19, we have to look into launching 2 campaigns at the same time, which actually the previous administration failed. We need really to continue the mitigation campaign and the vaccination campaign. And both are feasible when we have a system and structure. And it's interesting that I'm giving my feedback coming from a red state where the majority, there is a higher level of people resisting both campaigns that actually is well seen and perceived, you know, in people not social distancing, people not wearing masks and so on and so forth. So I think the idea of what we need to work towards in the next few months, I would say weeks and months, is really try to increase the level of this campaign through informing people awareness, cultivating awareness on people to get the buy-in. We need to increase the buy-in in adopting both campaigns and reducing the resistance that, you know, masking up or social distancing and even vaccination has become so political. So we need to figure out how to increase the buy-in and reduce the level of resistance, hopefully to get through this. And yeah, I totally agree with you with the alternation and the mutants, you know, aspects of COVID and the virus. That is a huge question mark of what will leave us with that. But again, that means that we really need to still social distance, wear masks, wash hands, which unbelievable simple thing to do. We are still singing this song for like almost a year now, about a year. So we're still singing the same rhythm for a year, and yet still people are not getting it until it's sometimes too late, even for them. As we heard testimonials of people dying or getting COVID, or because they didn't even believe that it was. So I think we have a lot more work to do, but awareness, try to increase one side or one activity or mindset and reduce the other one. I think that's probably the way we can go about to make it through the next year or two, maybe more.
Okay, thank you for those comments. And we were talking about, that's true. This is the first show after election, so a lot of things happened. Dr. Masood pointed out to some of the activities near inauguration. Dr. Masood, you were going to talk a little bit about that. Sure. But because before I go there, let me talk about the vaccine. The third one coming from Johnson & Johnson. Maybe next week they will give it emergency EUA, emergency use authorization. But the good thing is all of them have protection. So if we give it at a fast rate, we will protect our whole country, everybody, and then the variant will have less chance of coming in. Even the good news is that these vaccines, this one-dose Johnson & Johnson vaccine, has a 57% efficacy. But the good thing is that it will save you from severe disease. God forbid, nobody who got that vaccine will have to go to the hospital or need a ventilator. So imagine if it's a slight cough and cold and a slight fatigue, body aches, you can stay home. H1N1, like H1N1, I myself quarantined myself in my bedroom for 1 week when I got H1N1 way back in 2015. So the thing is, the vaccines are here. God willing, all of us will get it, and we are going in the right direction. Yes, distribution is difficult. If they give it to the clinics who have the roster for patients, we will just give it to them, text it to them, to come on, get it. That will make it much easier. Like we are pediatricians, we give shot. That's the bread and butter. So give it to us, and we'll let everybody, we'll even let the parents, the grandparents, everybody come in, have flu clinic, the shot clinic separately. So if they will find whatever they want to do, we are available. And now coming back to what happened on January 6th, God forbid it happens again, but the only problem is that a crime was committed and people went inside the Capitol, came out and went home, drove all the way to the other part of the country. This is unheard of. This is something that has never happened. Nobody imagined it. A lot of lawmakers were at risk. And some of them were threatened. Some of them were hiding all those things. And then we have cries or appeals of reconciliation. Let's move on. Let's forget everything. Okay, everybody wants to move on. Everybody wants to have a good life, live the same old USA that we have experienced for the last 25 years. But a law was broken. A law was broken, and somebody has to be held accountable. So going forward, we should be very strongly supporting that whatever crime was committed, people who ever did it should be held accountable, so that we move on and nobody else tries to do it again. Okay. Well, thank you for those comments. So, Dr. Arif, so if you give us your take, how things are in Texas, and are people taking finally seriously vaccination? Yeah. Thank you, Dr. Mobby, for having me on this show. So there are a couple of things that I think I would like to highlight about Texas perspective. As we all know, this Lone Star state is much bigger in size, and it is also like politically is becoming much more interesting and complex. It used to be straightforward Republican state, right? Things had already started changing for last couple of years. It's been 4 years that I have been living in this state, and I also observed many changes. For example, those bigger cities, Houston, Dallas, Austin, San Antonio, they are pretty much blue, and they have highest concentration of diversity of views and immigrants. And part of the reason, like these corporations who are bringing in more educated people there, their views are becoming more and more
I would say like a little bit more open-ended, blue and stuff. But if we go to some other parts of Texas, such as West Texas or like some other like less densely populated area, or where the agriculture and oil is a big thing, then things are like very much red. And why it has to be taken into context while we are talking about vaccination and vaccination campaigns, because we know the country has been very much divided, unfortunately, right? Even for those things, they should be commonsensical. Like, we all have the right to live. We all have the right to get better healthcare, and we all need to survive, right? And we all need to fight COVID-19. But all of these debates, they also get divided, like between Republican and Democratic stuff over here in Texas. Now, vaccination is happening in this state. As I said, like if we go to those urban areas where there is more blue map in those areas, you would see like really less resistance, and people are actually lining up to get vaccinated. But if you go to some other areas, like where I said, like where the oil money is, agriculture is, less densely populated area, things are difficult. People are still buying into all those conspiracy theories, and those anti-vaxxers have more kind of like a softer corner for them over there. So this is just a generalized situation. What should be done, Dr. Moby, you asked. My layman approach, what I am seeing over here, at least in the state of Texas, the way the vaccine had started unfolding in this area, like in the beginning, it was like through PCPs, like primary care physicians. And even though that's a great thing, like those physicians were making judgments and were making sure like people who have underlying conditions and stuff, they get it primarily. But there are challenges. There are so many people, like for example, illegal immigrants, right? They don't even have PCPs. Right? We have to take these things into consideration. We are not, everyone is human being, first of all, when it comes to disease. Disease does not care whether you have a passport, you have a green card, or you are alien, so to speak. Hopefully, President Biden is going to change the name from alien to non-citizens, right? So, okay, so the problem is PCPs won't be able to cater to the needs of those people who are not even going to doctors, or they cannot even afford to go to a PCP. So first of all, we have to figure it out how to give vaccine to everyone across the board. And I'm speaking at least for the state of Texas, because US is so big, it has like so much more challenges. Like for example, as Robert King said, like DC challenges are different, and I'm very much unaware of those challenges, right? Because I don't know like the overall population dynamic and stuff over there. So second, I believe when we say like corporate America is a problem, I say like corporate America at the same time is a solution. So for example, if Amazon and Walmart are coming forward and they are telling us like, hey, we are there to help you disseminate your vaccine. Let's come into terms with these big corporations who have already established units throughout this country, and let's try to benefit from it, because these are unusual, special circumstances that we should be doing. Third, I believe that we need to, our governments and our systems, whosoever are the policymakers are going to implement these decisions, I believe they should establish mobile clinics, like those mobile networks where those clinics can go to those far-flung areas and disseminate the vaccine in those areas, right? And there should be less paperwork, particularly asking questions like those, like where do you live, whether you are a legal citizen, or rather issue some sort of like card, passport, whatever you call it, that we can verify that this person actually has been vaccinated. So and then since I am a media and communication person, and one of you talked about campaigns, right? So it did excite me. Like government needs to also initiate a campaign, because there are two kinds of people. One kind of people in the United States, they're anti-vaxxers. I don't know whether we will be able to change their mind or not, right? However, there are other people who are just apprehensive about it.
they're afraid. They don't know whether these are different reactions they might get through. I mean, we need to launch those campaigns, and we need to tell them, by the way, for example, we get flu vaccines every year, and flu vaccines does have their reactions, right, in some people. But we are no longer afraid because it's just there. So we need to launch some campaigns to overcome those apprehensions and fears that people might have in their mind. So these are those couple of things that I would think from a layman's perspective. And as Dr. Moby, your show, basically, just like this, these kind of open discussion platforms need to take place more and more, so that like people can speak their heart out, they can discuss their apprehensions and problems, and we can get the expert opinion. As right now, Dr. Anwar Masood and Dr. Moby, you yourself, you both are experts in the field. And then we can learn, educate ourselves from you, and move forward from there. So these are just my 2 cents here in this program, talking about at least the vaccine perspective. Okay, well, that is very thorough, very nice. And that's definitely, I talked to Mr. King and others too. I love to do these kind of shows more, because I feel that this is our duty to guide the new administration. I think it's better if we give a solution and we help them. So, because we are actually volunteering for vaccinations, as well as posting our pictures, but also encouraging. Education is number one thing. That's true. There will be people who will never go for shot. There are which have a second doubt about it, or they have inadequate information. Unfortunately, most of the information, bad press gets a lot of press. Good press like us, when we try to give facts, they somehow they don't travel that fast. I don't know. I always find it very, very difficult to understand that, the good things you want to educate people, you want to tell, they somehow that is suppressed, and the only way. So look at the side effect of the vaccines. It's only like really very minimal per millions, and then all of a sudden you get that press. Oh, there's a reaction happening. Okay, well, look at the context of that reaction. It's in 1 in million, something like that. I mean, it's really low. And that's pretty safe vaccine. So but somehow the press was focused on only those 1 or 2 cases. That is very amazing. I think this is what is called journalism, right, Doctor? So, Mr. King, do you see in DC? I think we had earlier conversation, and you said when the vaccines opened up, there was kind of not a proper planning to distribute, and some of those minorities were left out on vaccination. Hey, sorry, let's unmute you. Go ahead, Mr. King. They still continue to be left out. One of the things that I did when I went to get my shot on a couple of weeks ago, and I challenged everybody on this panel. I chair the Ward 5 Dems Senior COVID-19 Commission. So when I went and got my shot, I had on my Biden's T-shirt, Biden mask, Biden hat, and actually took a picture of actually getting the vaccine. And I sent that, put it on YouTube, or put it on Facebook. I sent that to Lottie Dottie and everybody. And I got a lot of folks call back and said, Bob, you got the vaccine? I'm going to go get it. Because I represent a lot of seniors as the longest serving elected official in DC, both as an ANC and as an elected person. So I thought that one of the ways that I could contribute is actually had the nurse, when I go back and get my second shot on February the 8th, I'm going to take a picture with the nurse actually giving me the vaccine. I'm going to take that same picture and to continue to encourage, because we still got 37% of the Black population who say they're not going to take it. We got 75% of the people who are wearing masks, and then we got 24% of the people who say they're not going to wear masks. So the vaccine, mask, social distances, and then we said in order to make this effective, the goal is to try to inoculate some 80 million folks. So, and when during the Trump's administration, we set a goal to do 20 million. When he left office, it was only 40 million. And then we have a supply and demand issue. And like I said, in DC, it's really been a
awful situation. The campaign is very important to us. You know, we need our doctors. We need our black basketball players, black football players. You know, I saw the mayor the other day. She was taking the vaccine even with her eyes closed because she was scared of the needle. But at least she was out there. So we need all of our leaders, our city council members. Hopefully Caroline Petty is going to join me next week and get her shot because she represents a lot of people. And that's we find one, teach one, find one, teach one. And that's what we're going to have to do. Okay. So Caroline, you have to unmute yourself. Caroline, you have to